Don't forget to subscribe to our channel for more videos, and press the bell icon to receive updates. This revision of Chapter 9 CRPC of Order for Maintenance of Wives, Children and Parents. So we'll start with the topic. First of all, main question comes, what is maintenance? Now, very important thing, maintenance is the term mostly associated with the financial support that a woman can claim from her husband after divorce. But the children and the parents of a married man can also claim maintenance from him. Parents of unmarried son can claim maintenance from him also. Now, very important thing, this term maintenance is not defined in CRPC. But if we study section 3B of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, it defines maintenance clearly. Maintenance includes, in all cases, provision for food, clothing, residence, education, and medical attendance and treatment. In case of an unmarried daughter also, the reasonable expenses of an incident to her marriage. Now, Chapter 9 of the Code of Criminal Procedure deals with the order of maintenance of wives, children, and parents. Now, when we are studying any particular section or any particular statute, we have to understand what are their objects. So what are the objects of Chapter 9 of CRPC? So first, to provide speedy remedy against the starvation and to impose civil liabilities on parties till ruling of civil court arrives. Now, this is very important. I already mentioned that there is a provision for maintenance under Hindu Adoption and Maintenance Act 1956. So, but that is a civil procedure, and we know that civil procedures take long time. So, in between this period, that particular person who is a claimant or applicant requires some speedy remedy. So, section 125 of CRPC providing that speedy remedy. It is to be noted that this is the tentative arrangement, subject to the final determination of the rights by the civil court. Now, when we are going to that section 127, there will be alteration of maintenance order. In that, we will see that this order can be altered by considering that civil court judgment also. One case law is there, that is in Indrajit Kaur versus Union of India 1990, 1 SCC 344. In this case, the court held that the section 125 CRPC provides speedy remedy against starvation of the civil liabilities of the parties. The order made thereunder is tentative and is subject to the final determination of the right in the civil court. Now, what are provisions of section 125 subsection 1 of CRPC? If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife, unable to maintain herself, or his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not, unable to maintain itself, or his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of the physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself, or his father or mother unable to maintain himself or herself. Now, here I have used a particular color pattern. You can see in a green always there is a word unable to maintain herself, unable to maintain itself, unable to maintain itself, and lastly unable to maintain himself or herself. So that is also very important. Secondly, I use a red color pattern. Any person, that is the, what we can say, this is the respondent, and his wife, his legitimate or illegitimate minor child, his legitimate or illegitimate child, his father or mother, all these are claimants. All these are claimants or applicants. Okay, any problem? Now, we'll study these sections in a breakup form. The first and very important condition to be satisfied is that there should be a neglect and refusal to maintain. First condition for claiming maintenance is there should be a neglect or refusal of to maintain. The phrase neglects and refusal to maintain of section 125 subsection 1 gives this condition. Here we are expecting that such person from whom maintenance is claimed, that is respondent, shall provide food, clothing, residence, education, and medical attendance and a treatment to other person dependent on him. Dependent on him. There are requirements for survival of the dependent person. If the person fails to provide these things, then we can say that he is neglecting that dependent person or refuse to maintain that particular person. So here there are some case laws. In Dhankar versus Niranjan Singh, AR 1960, Punjab 295 case,
The court held that no order for maintenance can be passed unless neglect or refusal is thereby a person against whom the petition is filed is proved. It means that for applying this particular section 125, the neglect and refusal to maintain is to be proved. Proof of neglect or refusal is the basis of the claim for maintenance, and without such proof, no order of maintenance can be made, even though she is living separately in the exercise of her statutory right. Now, this is very important. Wife is living separately, but there is no proof. If there is no proof of neglect and refusal, then the section 125 cannot be invoked. Okay. In Narayan Sahu versus Sushma Sahu, 1992 1, crime 66 Orissa case, the court observed that refuse means the failure to maintain or denial of obligation to maintain after demand. Neglect, on the other hand, means a default or omission in the absence of demand. Neglect and refusal may be implied from the conduct of the party, and there need not be a formal refusal. In Bhikaji versus Manekji, that is 1907 9 Bombay LR 359 case, the court held that neglect or refusal of to maintain may be by words or by conduct. It may be express or implied. It may be express or implied. In Malti Sahu versus Khagyur Sahu, 1991 2, crimes 541 Orissa case, the court observed that, this is very important here, clear definition of this particular refusal is given. Court observed that no straight jacket formula can be laid down to answer the question whether the wife has been able to establish that her husband has neglected or refused to maintain her. It would depend on the facts and circumstances of the case in question. The court further observed that a situation may arise in which it is no longer possible for the wife to continue to live with her husband's house, in her husband's house, with dignity, prestige, and self-respect. Such situation may also arise in different circumstances, like physical assault or torture to the wife, creating a situation in the family which makes it unable for her to live with the dignity, husband's refusal to discharge his marital obligations, lack of feeling of warmth towards the wife from the husband and the members of his family, even a long separation between spouses without any acceptable material to show any genuine effort made on behalf of the husband to persuade his wife to live with him may sufficient to draw an inference of neglect and refusal to maintain. Now, this is the particular case in which complete meaning of the word that neglect and refusal is given. Now, the second condition for claiming maintenance is that the first conditions, now there are actually three conditions, and all the three conditions should be satisfied. First condition we already studied. Now we are coming to the second condition. The second condition is that the person claiming maintenance must be dependent on the person from whom the maintenance is claimed and unable to maintain himself and herself. Now, this is very important. Here, clear they are mentioning the person who is claiming the maintenance should be dependent, and he is unable to maintain himself and herself. I have already expressed you that in every that I have shown in a green color, that in every claimant there was a word unable to maintain himself or herself. Now, how it is interpreted by the court? In Bindelal versus Srimati Ushma Devi, 1988 Criminal Law Journal, NOC 19 Allahabad case, the court held that the applicant's inability to maintain herself himself is a sine qua non for claim of maintenance under section 125 subsection 1. Now, it means that that is a required condition, because that particular dependent, it is a that particular person is dependent, claimant is dependent and unable to maintain himself or herself. In Abdul Salim versus Najma Begum case, the court observed that the claimant may be wife, child, or parent. Proof of their inability to maintain themselves is a condition precedent to grant maintenance, and the burden of proving the same is on them. Now, this is a very important decision. इसमें अगर claimant अगर बोल रहा है, applicant बोल रहा है कि I am not unable to maintain himself or herself, then it is their duty to prove, their burden of proof to prove that they have dependent or they are unable to maintain themselves. The phrase unable to maintain does not mean that he or she be absolutely destitute and should be on the street, should beg and be in tattered clothes
if she for a while is taken care by some of her relatives, that will suffice to prove that she is not in the position to maintain herself. Now unable to maintain himself मतलब क्या, रास्ते पे भीख मांग रहे हैं, उनके कपड़े फटे हुए हैं, ऐसा नहीं है. कोई अगर उनका रिलेटिव उनको घर पे लेके जाता है और उनको उनकी देखभाल करता है तो वो भी सफिशिएंट है ये केस में कि वो डिपेंडेंट है बोल के. इन रामदयाल वैश्य वर्सेस अनीता कुमारी 2004 criminal law journal 3669 on page number 3670 MP case, the court held that the income of wife's parents would not be taken into consideration. Her own individual income would be relevant. Now, if the particular woman is living separately from husband and claiming for maintenance under 125 subsection 1, and she's taken care of by her parents. अगर हस्बैंड बोलता है कि उसके पेरेंट्स का तो इनकम बहुत अच्छा है तो वो नहीं चलेगा. Here when we are talking that it means her own individual income would be relevant. In Dinesh Sharma versus Rupa Rani Sharma 2013 criminal law journal 469 Patna case, where the wife was employed as a teacher and was drawing a fixed salary, it was held that she was able to maintain herself and was not dependent on the husband. Hence the High Court allowed the revision, set aside the order of maintenance and remitted the matter to the principal judge. Finally, court for rehearing and deciding the entire matter. Okay. In Teen Bhuneshwari versus Ramakrishnan 1989 1 crime 292 page number 294 Madras case, the court held that so far as the wife is concerned, her potential earning capacity is not relevant consideration. Now, this is very important decision. जब मेल के बारे में हम लोग बात करेंगे या दूसरे किसी के बारे में बात करेंगे तो उनकी जो कैपेसिटी भी कंसिडर की जाती है. वाइफ के लिए कंसिडरेशन नहीं होता है. अगर वो जॉब में नहीं है तो नहीं है. हस्बैंड ये नहीं बोल सकता है कि वो जॉब में लग के उसका क्वालिफिकेशन इतना है, उसका मतलब जॉब में लग के इतना कमा सके. दैट इज नॉट इन केस ऑफ वाइफ्स. ओके. In Norber versus Teresa 1971 criminal law journal 1496 case, the court held that in the case of children and parents, their age and the conditions of the life will prove their inability to maintain themselves. Where maintenance is claimed for the child which is only about 2 years old, it is obvious that it is unable to maintain itself, and no specific proof is essential to prove the child is unable to maintain itself. Physical or a mental defect on the part of the major children disabling them to maintain themselves are entitled for maintenance. Any child above the age of 18 years not being disabled by either mental or physical deformity is presumed to be having sufficient means. मतलब जिसका एज 18 से ज्यादा मेजर है तो ऐसे प्रिज्यूम करेगा कोर्ट कि they are able to maintain themselves. Okay, old age needs no further proof to establish one's inability, but in the case of wife, this at times causes much hardship. मतलब लेकिन हमने पहले केस लॉ में देखा है कि यहाँ उन्होंने बताया कि वाइफ के लिए कंडीशन उसका पोटेंशियल कंसीडर नहीं किया जाएगा. ओके. नाउ द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज द पर्सन फ्रॉम whom the maintenance is claimed should be he should have the sufficient means. If a man is healthy and able bodied, he must be held to possess the means to support his wife, children, parents, and he cannot be relieved of his obligation on the ground that he is mere boy and unemployed. Unemployed की बात नहीं होगी. अगर वो unemployed है ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर वो उसका हेल्थ अच्छा है, एबल बॉडीड है, बराबर है, then court assume that he has all the means to support his life. इसमें हम लोग देखेंगे इन ताहिरा वर्सेस अली हुसैन केस AR 1979 SC 362. The court held that the burden of proof that the respondent has sufficient means is on the applicant, but burden is not heavy and can be based on the preponderance of probabilities. On the establishment of this, the burden shifts to the respondent to the show that he has no sufficient means to provide maintenance. Now here clear court ने बताया कि सबसे पहले ये जो है बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, एप्लीकेंट के ऊपर, कि इसके मींस इतने हैं ये बताने. एंड वंस इट इज प्रूव्ड कि ये मींस है तो अभी बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट्स टू द रिस्पोंडेंट and he has to show that he has no sufficient means to provide the maintenance. In Chandrapal versus Harpyari 1991 CRLJ criminal law journal 2847 on page 2849 Allahabad case, the court held that the maintenance allowed to wife
must have relevance to the means of the husband. The magistrate must discuss the evidence and determine the means the husband or for fixing the amount of maintenance. Means not only mean the tangible property or the source of income of the husband, but also means capacity, potentiality and status. मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ उसके जो टेंजिबल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके इनकम क्या है, इसके ऊपर नहीं है, उसके कैपेसिटी क्या है, पोटेंशियलिटी क्या है और स्टेटस के ऊपर भी क्या है. जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई एक केस चल रहा है, डॉक्टर के वाइफ ने उसके ऊपर किया हुआ है, तो डॉक्टर हो सकता है बता देगा अभी मेरा कोई इनकम ही नहीं है, मेरा ये नहीं है, लेकिन कोर्ट क्या देखेगा, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या कमा सकता है, और वो डॉक्टर है तो उसका स्टेटस भी देखेंगे. In Chandra Prakash versus Sheila Rani, AR 1968, Delhi 174 case, the court held that the word sufficient means should not be confined to the actual pecuniary resources, but should have reference to the earning capacity. उसके earning capacity क्या है? Okay, in Muhammad Manzoor versus Nazma Khatun 1987, 2 crimes 539, 541 Patna case, the court held that the capacity or capability of the husband to pay must be proved to fix the quantum of maintenance. उसका कैपेसिटी प्रूव करना जरूरी है कि वो कितना मेंटेनेंस दे सकता है. In Tarak Shaw versus Minto Shaw 1984 Criminal Law Journal 206 Calcutta case, the court held that even in case of insolvency of the husband, the capacity to earn being here on him is material to construe that he has the means. Once debt, मतलब अगर किसी को कर्जा है तो वो भी रीजन नहीं होगा. वलीअम्माई वर्सेस धर्मलिंगा केस, आई हैव नॉट मेंशन्ड ओवर हियर. एंड सेकंड इज यंग एज एंड इनएबिलिटी टू गेट अ जॉब, जॉब मिल नहीं रहा है, ये केस में प्रभुलाल वर्सेस परमतिबाई केस. मोहम्मद अली वर्सेस सकीने बेगम, AR 1944, Lahore 392 case, the court held that the physical infirmity and ailments on account of which one cannot earn a material in the case of deciding the sufficient means. बराबर है. अगर किसी को बहुत बीमारी है, उसको हालचाल नहीं कर सकता है, तो नेचुरली उसका अर्निंग कैपेसिटी कम हो जाता है, उसको भी कंसिडर करना चाहिए. इन ताराचंद वर्सेस स्टेट 1973 क्रिमिनल लॉ जर्नल 1097 केस, the court held that income of other relations of the husband does not constitute that he has the means. वापिस जैसे क्लेमेंट के बारे में बात किया था, वैसे रिस्पोंडेंट के बारे में भी यहाँ क्लियर मेंशन किया हुआ है कि हस्बैंड के पिताजी के पास, मदर के पास, उसके भाई के पास, बहन के पास बहुत प्रॉपर्टी है, उनके बहुत मीन्स है, तो जब तक वो प्रॉपर्टी इसके नाम पे ट्रांसफर नहीं होती तब तक वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती, बराबर है. तो उससे मिलने वाला इनकम भी उसका नहीं होता है, तो वो नहीं होगा. वो सिर्फ हम लोग बात करेंगे तो हस्बैंड की अर्निंग कैपेसिटी की बात करेंगे. ओके, अभी और एक वर्ड हमने इसमें देखा था सेक्शन में, एनी पर्सन. तो एनी पर्सन कौन कौन हो सकता है? तो अलग अलग जो केस आज तक हो चुके हैं उसमें से एनी पर्सन का डेफिनेशन क्लियर हो गया है. इन राजकुमार वर्सेस यशोधरा देवी 1978 क्रिमिनल लॉ जर्नल 600 पंजाब एंड हरियाणा केस, द कोर्ट हेल्ड दैट वर्ड्स एनी पर्सन इंक्लूड ओनली फादर, सन, हस्बैंड बट डज नॉट इंक्लूड डॉटर और मदर और वाइफ. ये ओल्ड केस है, इसमें पहली बार उन्होंने बताया था, लेकिन आगे वाले केस है उन्होंने सबको इंक्लूड किया ऑलमोस्ट. In SK Chandrika versus Srimati Bayamma 199 4 crimes 155 Karnataka case, the court held that any person in section 125 CRPC includes mother also. मगर अगर mother earning की capacity है, she has sufficient means, then she has also to pay to children. In Sushila versus Kamala Devali 99 4 crimes 191 Kerala case, the court held that a daughter is also liable to maintain her father. As an expression, his father would also mean her father. In Vidya Manor Arbat case, Arbat versus Kashi Rao, 1986 Criminal Law Journal 1399, Bombay case, the court held that an indigent father is entitled to claim maintenance from her married daughter also. In Deepak Banerjee versus Sudipta Banerjee case, 1988 Criminal Law Journal 1627 Calcutta case, an applicant by wife and child under section 125 of CRPC cannot be defeated because the opposite party is domiciled in USA. बाद में हम लोग एक और एक केस लॉ बाद में जब भी आएगा तो देखेंगे, उसमें देखेंगे स्टेप मदर को भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड द स्टेप मदर हैज नो चाइल्ड, शी इज चाइल्डलेस
and her husband, means father of the respondent, is not capable of maintaining her. Okay. Any problem regarding this? These are the three conditions which are essential. Now, when we are going in a court, now what are the applicant strategy? As a lawyer, what should be our strategy? The first and very important, when we are representing applicant, we have to prove that neglected or matlab respondent has to prove that she is neglected or refused to maintain him or her. Sufficient, second, that respondent has sufficient means. And last and very important, that he or she has the inability to maintain himself or herself. Then what respondent needs to prove? So first of all, very important thing, that marriage is illegal. लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें proof of that marriage is not that hard or strong as in case of 498 case and all. So it is very difficult. Then what else we have to prove? That he has no sufficient means. जो मतलब एप्लीकेंट ने बताया कि इतने मीन्स है, तो मेरे इतने मीन्स नहीं है, उसको बताना है. दैट ही शी हैज नॉट निग्लेक्टेड और नॉट रिफ्यूज टू मेंटेन द एप्लीकेंट, मतलब कभी उसने निग्लेक्ट और रिफ्यूजल नहीं किया, ये प्रूव करना है उसको. एंड दैट द एप्लीकेंट हैज द एबिलिटी टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये हमको रिस्पोंडेंट की तरफ से प्रूव करना है. क्लेमेंट अगर एग्रीड वाइफ है, तो हु कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर द डेफिनेशन ऑफ वाइफ? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें देख, लीगली वेडेड वाइफ एंड डाइवोर्स वाइफ बट नॉट रीमैरिड वाइफ. The Code of Criminal Procedure does not define the term wife clearly, except indicating in the explanation to section 125 its inclusive character so as to cover a divorce. The explanation attached to section 125 subsection 1 of the Code of the Criminal Procedure says that the term wife includes woman who is divorced by or has obtained divorce from her husband and has not remarried. So who all can maintain this under this divorce of definition under wife? So first is legally wedded wife and second is divorced wife but not remarried. A woman cannot be divorcee unless there was a marriage in the eye of the law preceding that status. मतलब अगर डाइवोर्सी बोल रही है तो उसका पहले मैरिज हुआ होना जरूरी है, वो भी कोर्ट के मतलब लॉ के हिसाब से हुआ होना जरूरी है. Unlike the provisions of maintenance in personal law, no strict proof of performance of essential rights of her marriage is required for this particular section. In Ishwar Singh versus Srimati Hukum Kaur, AR 1965, all Allahabad 465 case, the court held that the expression wife means only a legitimate wife, and therefore a marriage proved illegal cannot give a wife any right to get maintenance. In Sautaben Samabhai Bhatia versus State of Gujarat 2005, CRLJ 2141 on page 2143, Supreme Court case hai. The court held that the expression wife means only legally wedded wife. In Kongini Balan versus Visalaschi 1986 Criminal Law Journal 697 Kerala case, the court held that the expression wife includes a woman who obtains divorce by mutual consent. In Muhammad Amin versus Wakil Ahmad, AR 1952 SC 350 case, the legal status of the woman as wife was questioned. And the Supreme Court held that the presumption of marriage arises in Mohammedan law in the absence of direct proof from the prolonged and continual cohabitation as husband and wife. मतलब बहुत देर तक बहुत टाइम तक वो एक साथ रह रहे हैं, that is sufficient to prove. Okay. Now next comes अगर ये केस proof of marriage की बात करेंगे, so it is not as strict as that required as a trial of an offense under section 494 of the Indian Penal Code. In Dwarika Prasad versus Prasad Satpathy versus Vidyut Prava Dixit, AR 1999 SC 3348 case, the court held that the validity of the marriage for the purpose of summary proceedings under section 125 of CRPC is to be determined on the basis of the evidence brought on record by the parties. The standard of proof of marriage in such proceedings is not as strict as that required in a trial of offense under section 494 of the Indian Penal Code. If the claimant in proceedings under section 125 succeeds in showing that she and the respondent have lived together as husband and wife, but live together, it's very important, they live together as husband and wife, the court has to presume that they are legally wedded spouses. And in such a situation, one who denies the marital status can revoke the presumption. Now this is very important. Once a wife proved that they live together, now that particular burden of proof goes to husband.
that he has to prove that they are not lived together. When the respondent does not dispute the paternity of the child and accept that the marriage ceremony was performed, though not legally perfect, he cannot award maintenance proceeding. In Suman Nivrutti Satav versus Nivrutti Dattu Satav, Bombay High Court decided on 26 August 2009 case, the High Court commented that the fact that both had stayed together as husband and wife and that a daughter was born them was sufficient evidence of marriage for the purpose of awarding maintenance under this section. In Lakshminder Kaur versus Gurmil Singh, 1 2008 DMC 148 Punjab and Haryana case, the court held that if the claimant in proceedings under section 125 of the code succeeds in showing that she and the respondent have lived together as husband and wife, the court can presume that they are legally wedded spouse. And in such situation, the party who denies the marital status has to rebut the presumption. In Vithabai Lakshman, 1972-75 Bombay LR 447 case, the court opined that the standard of proof that the parties to proceedings are validly married is not so high as in prosecution under section 494, 495, 497 and 498 of the Indian Penal Code. But the burden of proof prima facie lies on applicant. In Krishna Chandra Jerai versus State of Jharkhand, 1 2005 DMC 437 Jharkhand case, the wife sought maintenance but could not prove the marriage. Although the husband did not deny the fact long cohabitation and that they had 3 children. The High Court held that a strict proof of marriage is not necessary in summary proceedings. According to the court, section 125 is not utilized for defeating the right conferred by the legislature to the destitute women, children or parents who are victims of social environment. Now, what is the condition for second wife? What is the position of second wife? इसमें maintenance का condition कैसे है? As per the Hindu Marriage Act 1955, if a man or a woman marries again in spite of living spouse, not divorce, then the second marriage is void ab initio. Hence, the second wife cannot claim maintenance under section 125 of CRPC, but she can claim maintenance under Domestic Violence Act. This is very important. Now, here the case law in Yamunabai Anantrao Adhav versus Anantrao Shivram Adhav, AR 1988 SC 644 case. The court held that the marriage of the woman in accordance with the Hindu rites with a man having a living spouse is a completely nullity in the eyes of law, and she is therefore not entitled to benefit of section 125 of the code. तो ये सेकंड उसका जो मैरिज है उसको नल किया है, नल एंड वॉइड किया हुआ है क्योंकि उसकी पहली वाइफ स्पाउस जिंदा है. इन मंदा आर राठौड़ वर्सेस रामजी घनश्याम थावर, मंदा आर थावर वर्सेस घनश्याम थावर, रामजी घनश्याम थावर, बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच, क्रिमिनल रिवीजन एप्लीकेशन नंबर 317/2006 case. The court held that the second wife was not entitled to maintenance under section 125 CRPC, but she was entitled to maintenance under the Protection of Women from Domestic Violence Act. The court awarded compensatory cost rupees 15,000 to the woman to help her pursue proceedings under PWDEVA. In Baby Devi versus Arun Kumar Aman, 1999 Criminal Law Journal 4510 case, the court held that a second wife whose marriage is void is not entitled to maintenance, but children born of such marriage are entitled to maintenance under section 125 CRPC. Now, what is the position of the divorcee wife after remarriage? Divorcee wife cannot claim for maintenance for herself after her remarriage, but she can claim for maintenance for a child born out of the first marriage in her custody. Now, this is very important. उसके लिए वो maintenance remarriage के बाद में नहीं मांग सकती, लेकिन अगर उसके पास पहले मैरिज की वजह से जो चाइल्ड है और उसके पास उसकी कस्टडी है तो उसके लिए वो मेंटेनेंस मांग सकती है. इन रामेश्वर चंद्रा वर्सेस बीना सक्सेना 1982 CRLJ 1426 Allahabad case, the court held that application of maintenance by divorced wife who was not married at the time of filing of the application, though remarried subsequently, is maintainable. जब तक उसका रीमैरिज नहीं होता है तब तक पीरियड के लिए उसके लिए मेंटेनेंस उसको मिल सकता है, तब तक उसका जो एप्लीकेशन है वैलिड है और वहां तक उसको मेंटेनेंस मिल सकता है. इन ए रविंद्र प्रभु वर्सेस देवाली विजयम्मा 1983 SCC क्रिमिनल 103,
case, the court held that the case of remarriage, the wife would be entitled to maintenance up to the date of remarriage and for a child so long as child is in custody and remains with her. Now, what is the effect of personal laws? Section 125 of CRPC are applicable to all citizens irrespective of personal laws of religion, of community to which the applicant and respondents belong. In Begum Subanu, also alias Saira Banu, 1987 CRLJ 1980 case, the Supreme Court held that the right provided by under the personal law of the Muslim does not disentitle the first wife to claim maintenance as against her husband when he marries subsequently. In Ahmad Khan versus Shahbanu Begum, AR 1985 SC 945 case, the question that came from consideration before the Supreme Court was whether a Muslim wife whose husband had taken a mistress was entitled to claim maintenance from her husband. The point of interest was that since the husband permitted by Muslim law to take more than one wife, can his second marriage afford a legal ground to the wife to live separate and claim maintenance? The Supreme Court, while interpreting the explanatory clause of subsection 3 of section 125, observed that there are matrimonial injuries that entitle a neglected wife to live separate and claim maintenance. The explanation has to be construed from the point of view of the injury to the matrimonial right of the wife and not with the reference to the husband's right to marry again. The explanation has to be seen in its full perspective, but not disjunctively. The court decreed maintenance, holding that the right of polygamy does not curtail the application under section 125(1) to Muslim first wife again. Thus, even if the personal law permits such marriage, both the wives are entitled, for it is neglected by the husband as against other. Similarly, keeping a mistress will amount a neglect. In Sandhya Kumari versus State of Bihar, 2001 DMC 6 case, the court held that the scope of section 125 CRPC as well as section 24 of the Hindu Marriage Act stand on a different footing. It is true that the maintenance granted under Hindu Marriage Act can be adjusted out of the amount granted under section 125 CRPC. Any problem regarding it? ये केस होता है हमारे, हमने देखा है कि जो पहला क्लेमेंट है वाइफ, ना दूसरे क्लेमेंट हमने देखे थे बी में लेजिटिमेट, बी और सी में लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड. तो लेजिटिमेट चाइल्ड का डेफिनेशन देखा है जो चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ लीगल मैरिज हो गया उनके चिल्ड्रन. बाद में चाइल्ड ऑफ वॉइड मैरिज वॉइड है लेकिन उनके चिल्ड्रन वॉइड है. जो इलेजिटिमेट चाइल्ड का डेफिनेशन ऐसा है कि जो लेजिटिमेट नहीं है उसको इलेजिटिमेट बोला है. इन मीनाक्षी अम्मल versus Karupanna Pillai 1924 48 Madras 50 case, the court held that the maintenance allowed to a girl cannot be cancelled on her marriage without proof that she has thereby become able to maintain herself and cease to depend upon the maintenance order. अभी यहाँ उन्होंने क्लियर किया है कि एक माइनर चाइल्ड को अगर मेंटेनेंस कोर्ट ने पहले ऑर्डर दिया कि उसको मेंटेनेंस दे दो, बाद में उसका मैरिज हो जाता है गर्ल का. जैसे ही गर्ल का मैरिज होता है तो अगर उसके फादर ने उसको या मदर ने मेंटेनेंस देना बंद कर दिया तो कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, कि आपको पहले देखना चाहिए कि मैरिज होने के बाद में शी इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ. इन सेवला सरोजा वर्सेस ससी स्तना 1989 मद्रास LW क्रिमिनल लॉ 146 criminal 146 case, the court held that even in cases where the child except a married daughter has attained a majority, if he or she is unable to maintain himself on herself owing to either physical or a mental defect, the court can make an order for maintenance. ये important है, अगर child अगर मेजर हो जाता है तो फिर child ने देता मेजर after attaining majority, अगर उसको physical या कोई mental abnormality है, defect है, तो उसको maintenance देना ही पड़ेगा भले वो मेजर होने के बाद में. In L. Usharani Kumari versus DS Lakshmaya 1993 Criminal Law Journal 1982 Karnataka case, the court held that the children attaining majority but are not having physical or mental abnormality are not entitled to maintenance under section 125 of CRPC. Clear mention किया है उन लोग ने कि जिनका एज 18 हो गया है और जिनको कोई भी फिजिकल और मेंटल एब्नॉर्मलिटी उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा. मीनिंग ऑफ फ्रेज हिज फादर और मदर, दैट इज अ डी पार्ट. The phrase his father or mother includes biological and adoptive parents. एक बार adoption पे child लिया तो उसका जवाबदारी बढ़ता है कि उसके जो adoptive parents है उनकी भी जवाबदारी ले ले. In Pandurang Baburao Davade versus Baburao Bahurao Davade 1980 CR LJ 256 Bombay case,
the court held that to maintain parents is a statutory obligation. That claim cannot be defeated by pleading that the father had failed to fulfill his parental obligation towards the children during their major minority. In Ayyagari SVP Rao versus A.V. Veni 1989 CRLJ 673 Andhra Pradesh DB case, the court held that the mother is one who has given birth to the child. A stepmother can be dependent but she cannot claim maintenance. जैसे यहाँ एक केस में बोला है, लेकिन आगे वाले केस में देखो उन्होंने क्या बोला है. Because that is the latest case, that's why we have to consider this case only. In Kirti Kant D. Vadadoria versus State of Gujarat, 1996, that Supreme Court case, criminal 762 case, the court held that a childless stepmother may claim maintenance from her stepson, childless. Okay, claim maintenance from her stepson, provided she is a widow or her husband is living in also incapable of supporting the maintenance to maintain herself. Now we'll come to the further provision. If you are at Bare Act 125, section 125, ABCD we already cut, then there is a statement, a magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such persons to make a monthly allowance for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate as such magistrate thinks fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct. When we read a magistrate of a first class can adjudicate the matter. Now the first question is who can adjudicate the matter. Now if you study the particular this provision, at the start only they have said a magistrate of the first class. So a magistrate of first class can adjudicate the matter. A magistrate of the first class can adjudicate the matter under section 125 of CRPC. When the magistrate is satisfied that there is a case of neglect. Now this is very important. First of all, that magistrate has to satisfy himself. There is a case of neglect or refusal to maintain the claimant or the applicant, what we can say. The applicant is unable to maintain herself. Now see, this is very important. He has to, we already studied there are three conditions. So magistrate has to find out whether these three conditions are getting satisfied. Or if all the conditions are getting satisfied, then only proceedings will start. First, he has to confirm whether there is a, what we can say, neglect or refusal to maintain. The second, he has to confirm that applicant is unable to maintain herself or himself, what we can say. And lastly, he has to check whether that defendant or respondent has that sufficient means to provide maintenance to this particular applicant. Okay. Now previously there was a clause rupees 500 per month का था, उसको अभी delete किया दिया है यहाँ. Now here they have said that respondent has to pay the monthly allowance, fix monthly rate time to time. Okay. Go see. Now how the form of maintenance, how this will be. Monthly allowance at fixed monthly rate. Now this is very important. We are going to study case law. The word monthly allowance at a fixed monthly rate. That fixed monthly rate is also important. The respondent must pay this allowance time to time as directed by the magistrate. Magistrate उसको direct करेगा, उसके हिसाब से उसको जब जब बताएगा तभी देना पड़ेगा. To a person directed by the magistrate. और किसको देना है? To a person directed by the magistrate. ये पर्टिकुलर पॉइंट, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है. जब चाइल्ड को देना है तो चाइल्ड को तो डायरेक्ट नहीं दे सकते, तो उसका जो गार्डियन होगा जिसके कस्टडी में वो चाइल्ड है उसके लिए ये होता है टू अ पर्सन डायरेक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट. नाउ इन दिस केस सम केस लॉज आर देयर. इन उपेंद्र नाथ धाल वर्सेस सौदामिनी दासी, बहुत ओल्ड केस है, 1886 का केस है. द कोर्ट हेल्ड दैट द रेट अवॉर्डेड शुड बी डिटरमाइंड एंड फिक्स. इट इज नॉट परमिसिबल टू मेक एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस एट अ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग रेट. द रेट में if necessary be altered from time to time under section 127 of CRPC. Now this is very important. जो मैंने पहले ही बोला, तो पहला क्लॉज था monthly allowance at fixed monthly rate. Now what court says that it should be fixed. ऐसे नहीं हो सकता है कि ये महीने में आप 1000 दे, ये साल 1000 दे दो, बाद में 10% का हर साल में इंक्रीज होगा, ये टाइप का स्टेटमेंट नहीं चलेगा. इट शुड बी फिक्स. 1000 per month means 1000 per month. Okay. Now it can be altered under section 127. We can alter this particular order. उसको increase किया जा सकता है, decrease किया जा सकता है. All those things different. That is alteration. But once a alteration, that is also should be a fixed per month. Next in Vardappa Naidu versus Thaya Ramal 1990 का केस है.
the court held that the order for maintenance in a form other than monthly cash payment is not valid order. मतलब क्या मंथली कुछ नहीं देगा, मैं उसके बदले इसके आई विल गिव यू समथिंग एल्स, ये टाइप का ऑर्डर जो है नहीं चलेगा. In Sambhunath Jaiswal versus Anjana Jaiswal 1993 crimes 268 Calcutta case, the court held that burden of proving quantum of his income is on husband and not on wife. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ कि वाइफ बता देगी इसका इनकम इतना इतना है, उसके थोड़े बहुत प्रूफ देंगे, लेकिन उसको डिनाई करना कि मेरा ये उसने जो बताया उतना मेरा इनकम नहीं है या मेरा इतना ही इनकम है, ये जो प्रूफ है ये हस्बैंड को देना पड़ता है. So that burden of proof lies on him. Okay. Now we'll come to this. Provided उसका एक पहला प्रोविजो है, उसके साथ में अगर रीड करेंगे तो नीचे प्रोविजो है, provided that the magistrate may order the father or a minor female child referred to in clause B to make such allowance until she attains her majority if the magistrate is satisfied that her husband or such minor female child if married is not possess of sufficient means. कल किसी ने तो ये क्वेश्चन पूछा था, तभी मैंने बताया था कि अगर मैरिज भी उसका अगर डॉटर का अगर हो जाता है, लेकिन मैरिज के बाद में उसका हस्बैंड उसको मतलब मेंटेन करने के लिए कैपेबल नहीं है, उसका कैपेसिटी नहीं है, उतना उसका इनकम नहीं है, इन दैट केस आल्सो फादर और मदर हैज टू गिव मेंटेनेंस टू दैट पर्टिकुलर गर्ल चाइल्ड आफ्टर मैरिज आल्सो. देयर इज वन केस लॉ in Minashi Ammal versus Karupanna Pillai 1924 48 Madras 503 case, the court held that the maintenance allowed to a girl cannot be cancelled on her marriage without proof that she has thereby become able to maintain herself and cease to depend upon the maintenance order. मतलब यहाँ ऐसे हो गया कि उसका मैरिज हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि विदाउट प्रूफ, मतलब आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो एबल हो गई, शी इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ और इज हर हस्बैंड इज एबल टू मेंटेन हर एक्सेट्रा, यू हैव टू प्रूव इट. तो उससे क्या होता है कि अगर ये प्रूफ नहीं देंगे तो मेंटेनेंस का ऑर्डर रहेगा, चालू रहेगा. ओके. नाउ सेकंड प्रोविजो अटैच्ड टू सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी. It says that provided further that the magistrate may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this subsection, order such person to make a monthly allowance for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceedings which the magistrate considers reasonable, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct. Now try to understand this. When the application is made by the applicant in the court under section 125 of CRPC, there is a possibility that the applicant has to wait for a long time to get that relief from the court. Hence the provision is made that on satisfaction the magistrate may order payment of interim maintenance. ये जो बता रहे हैं interim maintenance की provision है, interim maintenance for surviving and for expenses of the proceedings to the applicant from the रिस्पोंडेंट. तो ये प्रोविजन जो इंटरिम मेंटेनेंस की है, यहाँ हम लोग केस लॉस देखेंगे कुछ. इन सावित्री वर्सेस गोविंद सिंह रावत AIR 1986 SC page 1984 case, the Supreme Court held that interim maintenance pending the final disposal of the application under section 125 can be awarded. मतलब यहाँ उन्होंने इंटरिम जो मेंटेनेंस है इसको legal compulsory can be awarded. It can be, it depends on the discretion of the magistrate. In Santosh Kumar Banerjee versus Janushri Mukherjee 1998 1 crimes 570 Calcutta case, the court held that in application for grant of interim maintenance, summary inquiry and not elaborate inquiries contemplated. In Santosh Kumar that is in Karansanji Chatraji Hadiol versus Jasuben Ram Singh Ji Parmar 1998 Criminal Law Journal 273 page number 277 Gujarat DB case, the court held that the interim maintenance granted under section 125 is only provisional maintenance and subject to the final determination and is subject to other conditions.
Now, this is very important. It is the court is making clear that is this is a temporary provision, or we can say provisional maintenance. क्योंकि ये पूरा केस होने के बाद में जो फाइनल जजमेंट आएगा या फाइनल ऑर्डर आएगा उसमें फाइनल मेंटेनेंस कितना होगा इसका उसके बारे में बताया जाएगा. तब तक के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट है. ओके, देन यू कैन सी देयर इज अ थर्ड प्रोविजन आल्सो अटैच्ड टू इट. डेट फ्रॉम व्हिच इंटरिम मेंटेनेंस इज एप्लीकेबल. Okay, date from which the interim maintenance is applicable, provided also that an application for the monthly allowance for the interim maintenance and expenses of proceedings under the second provision shall, as far as possible, be disposed of within 60 days from the date of service of notice of the application to such person. ये कोर्ट को देखना कि if the applicant makes an for देखो उसमें एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस अलग है और पहले वाला जो मतलब उसने जो पहले शुरुआत में एप्लीकेशन दिया दैट इज फॉर मेंटेनेंस. बाद में जब कोर्ट का प्रोसीडिंग चालू होता है तब एप्लीकेंट वापस एक एप्लीकेशन देता है कि मुझे इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए. तो जिस दिन से इंटरिम मेंटेनेंस का उसके कोर्ट के पास एप्लीकेशन आ गया उस दिन से 60 डेज के अंदर कोर्ट को इसके बारे में डिसीजन देना ही है. दैट इज द थर्ड प्रोविजन. ओके, नाउ विल कम टू सबसेक्शन 2 ऑफ 125. Okay, it says that any such allowance for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings shall be payable from the date of the order, or if so ordered, from the date of the application for the maintenance or interim maintenance and expenses of proceedings, as the case may be. Now, we can see here, it is saying that there is a interim maintenance or maintenance to be from date of order. But in some cases, if magistrate finds is required, then he can order the maintenance from the date of application for the maintenance. Okay, we have some case laws. In Sabita Sahu versus Khirod Kumar Sahu, 1991, 1 crimes 171, page number 173, Orissa case. The court held that if the magistrate, considering the facts and circumstances of the case before him, deems it just and proper to direct that interim maintenance should be paid not from the date of order or from the date of application for interim maintenance, but from the interior date of filing application under this order, he should discuss the reasons for such direction. अभी ये केस में बोला गया था कि मैजिस्ट्रेट को रीजन देने हैं कि why he is asking to pay the maintenance from the date of application. लेकिन आगे वाले केस में क्या बताया आप लोग देखो. इन शहाबुद्दीन वर्सेस स्टेट यूपी 2006 क्रिमिनल लॉ जर्नल NOC 57 केस, द कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 125 डज नॉट रिक्वायर द मैजिस्ट्रेट टू गिव सेपरेट रीजंस इफ ही अलाउज इंटरिम मेंटेनेंस फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. मतलब वो केस में ये 2006 की केस है तो नेचुरली 91 के बाद में है तो नेचुरली दिस विल होल्ड कि इसके बाद में मैजिस्ट्रेट को रीजन नहीं देना है. इन भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना AR 2014 SC 2875 case, the court held that in the case of grant of maintenance, there was a long delay in disposal of proceeding due to adjournment taken by the husband and laxity shown by the court in dealing with the case, and the wife was made to sustain herself for years. It was held that the circumstances justify the grant of maintenance from the date of application. तो यहाँ आपको ये प्रोविजन जो दी गई इंटरिम मेंटेनेंस वो क्यों दी गई ये कोर्ट क्लियर कर रहा है. सी व्हाट इट सेज. In the case of grant of maintenance, there was a long delay in disposal of proceedings. ये cases में due to adjournment taken by the husband थोड़ा दिन के बाद में adjournment अगली डेट ऐसे करते जाएगा या कोर्ट के laxity होगी, laxity shown by the court in dealing with the case. In that case, the wife may has to sustain herself for very long time, for years, what we can say, and that's why the provision of this particular interim maintenance is given. Okay, now we come to provision of section 123 subsection 3. If any person so order fails without sufficient cause to comply with the order, any such magistrate may for every breach of the order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such persons for the whole or any part of each month's allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceedings, as the case may be remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend to
1 month or until payment if sooner made, provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the court to levy such amount within a period of 1 year from the date of in which it is became due. Now I'll do proviso first. प्रोविजो इसलिए कर रहा है हमें कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है एप्लीकेंट के ऊपर, और बाद में हम लोग ऊपर वाले प्रोविजन देखेंगे। प्रोविजन इसमें इंपॉर्टेंट है, जो एप्लीकेंट है उसको 1 साल के अंदर, जब समझो अमाउंट उसका मतलब उसका मेंटेनेंस का अमाउंट ड्यू हो गया है, उस ड्यू डेट के 1 साल के भीतर, 1 साल के अंदर उसको कोर्ट को बताना है कि ये मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है फ्रॉम दिस ड्यू डेट, 1 साल के अंदर। 1 साल के बाद में नहीं कर सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों भी हो गया, ऐसा प्रोविजन क्यों रखा, उसका भी एक्सप्लेनेशन एक कोर्ट जजमेंट में आ गया है कि 1 साल का ही प्रोविजन क्यों रखा है, उससे ज्यादा क्यों नहीं करने है दिया। दैट प्रोविजन इज आल्सो गिवन जजमेंट इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड। तो प्रोविजन सबको समझा। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिस दिन एप्लीकेंट का ऑर्डर, मेरे कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि इसको मेंटेनेंस देना है, तो कोर्ट ने समझो मंथली आपको इतना इतना देना है, तो समझो हम लोग बात करते हैं, आज 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2020 को उसका एक मेंटेनेंस का जो इंस्टॉलमेंट था मंथली देने का, वो ड्यू हो गया, और समझो उसने नेक्स्ट मंथ में नहीं दिया, उसके नेक्स्ट मंथ में नहीं दिया, ऐसा नेक्स्ट मतलब 30 सितंबर 2021 तक चलेगा। उसके अंदर एप्लीकेंट को कोर्ट में जाके बताना है कि ये मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, तो ही ऊपर वाला प्रोविजन लगने वाला है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच पर्सन ऑफर्स टू मेंटेन हिज वाइफ ऑन कंडीशन हर लिविंग विथ हिम and she refuses to live with him, such magistrate may consider any grounds of refusal stated by her and may make an order under this section notwithstanding such offer if he is satisfied that there is a just ground for doing so. अभी बहुत बार क्या होता है ऐसे केस में, बहुत बार ऐसे होता है कि बाद में हस्बैंड बोल देता है हाँ ठीक है मेरे से गलती हो गई, इसके बाद में मैं निगलेक्ट नहीं करूंगा, रिफ्यूजल नहीं करूंगा, इसके बाद में मैं उसको अच्छी तरह से सब रिस्पेक्ट बराबर उसके साथ बिहेव करूंगा। लेकिन उसमें अगर वाइफ अगर ना बोलती है और उसका सफी अच्छा एक कोई रीजन दे देती है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि रीजन प्रॉपर है, तो वो उसके ऑफर को कंसीडर नहीं करेगा और मेंटेनेंस का ऑर्डर देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द केस लॉज नाउ इन दिस केस। Okay. सी द फर्स्ट इज द सिद्धेश्वर तेवर वर्सेस ज्ञानदासी 1894 का केस है। The court opined that the imprisonment that is order is not punishment for the contempt of the court order, but it is for the unpaid portion of the maintenance. Now this is very important कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया लेकिन वो मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा है, तो ऐसे लगेगा आपको उसमें जो उसको 1 मंथ की सजा जो बता रहे हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है क्या, तो कोर्ट ने क्लियर किया है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा नहीं है। इट इज अ प्रोविजन इन द लॉ और एक्ट में प्रोविजन है उसका, और ये जो अनपेड जो पोर्शन मेंटेनेंस का उसने दिया नहीं है उसके लिए उसको सजा है। इन कंतप्पा वर्सेस शरणम्मा AR 1967 Mysore 81 case, the court observed that where one warrant for the recovery of areas of more than 1 month maintenance is allowance fixed under section 1 of this section has issued, under this subsection the person against whom a warrant is issued is liable to maximum term of imprisonment of 1 month for each complete 1 month's arrears. But if a balance of the allowance for the portion of the month is due, he is liable to be imprisoned for the further term of 1 month for such areas. इसका मतलब ये ध्यान में रखो, कोर्ट ने क्लियर किया है कि वारंट हर महीने निकलेगा और हर महीने के जितना जितना उसका मतलब अभी पहला 4 महीने का अगर ड्यू है उसके पास तो इम्प्रिजनमेंट 4 महीने की हो जाएगी, 4.5 महीने की है तो 5 की हो जाएगी, राउंड अप कर देंगे नेक्स्ट इसको, 5 की हो जाएगी। 7 अगर महीने का ड्यू है तो 7 साल की हो जाएगी, 7 महीने की हो जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा आपको माने 1 साल की बात कर रहे हैं वो लोग। तो ये केस एक आप लोग देख रहे हो, इन मुदारी बिन वर्सेस सुखदेव बिन AR 1967 Calcutta 136 case, the court held that in such a case of default the imprisonment cannot be more than 12 months
since the provision of this subsection stipulated that an application within a period of 1 year from the date of which is become due. बराबर है. अब ये प्रोविजो क्यों दिया है, इसका कोर्ट ने भी एक्सप्लेनेशन दिया है. The first proviso is intended to prevent a person entitled to maintenance from being negligent and allowing areas to pile up until their recovery would become a hardship or impossibility. Okay, जो आदमी मतलब सोते रहता है उसके लिए कानून को देता है. अभी देखो वो जो आदमी को राइट मिला है मेंटेनेंस का, अगर वो 1 साल से ज्यादा टाइम तक टाइम पास करना, तो उसको ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा उसका मतलब होता है, तो कोर्ट उसके लिए कुछ नहीं करेगा. और बाद में एक बार अमाउंट बढ़ जाता है ना, तो फिर सामने वाले पार्टी को भी एक साथ देने में पॉसिबिलिटी नहीं होती है. ये भी देखा गया है इसमें. ओके, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट? ओके, नाउ विल गो टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 सबसेक्शन 4. No wife shall be entitled to receive an allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceedings as the case may be from her husband under this section if she is living in adultery or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband, or if they are living separately by mutual consent. एक important चीज आपको बता दूं मैं यहाँ, whenever you are reading subsection 4 you have to read subsection 5 also with it. तो ये दोनों सबसेक्शन एक साथ में काम करेंगे, subsection 4 and subsection 5 of 125. So maintenance can be rejected if the applicant's wife is living in adultery, okay, or without sufficient reason living separately, and third living separately by mutual consent. अभी adultery में है, adultery मतलब अभी तक उसका डाइवोर्स नहीं हुआ. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये तीनों भी क्लॉज आपको लगाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है उनमें डाइवोर्स नहीं हुआ होना चाहिए, मतलब उनका मैरिज सस्टेन होना जरूरी है इसमें, तो ये 3 क्लॉज लगेंगे ना. डाइवोर्स होने के बाद में शी दैट वाइफ कैन डू एनीथिंग, हस्बैंड कैन डू एनीथिंग. यस, तो दैट इज वेरी मैरिज शुड इज सस्टेन. अगर मैरिज सस्टेन्ड है तो ये कैसे क्या कि वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री. सेकंड, विदाउट सफिशिएंट रीजन, मतलब वो वाइफ रीजन नहीं दे सकती कि वो सेपरेट क्यों रही है, इसका प्रॉपर सफिशिएंट मतलब प्रॉपर रीजन नहीं दे रही है, और दोनों म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रहे हैं. इन दैट केस दिस प्रोविजन इज नॉट अट्रैक्टेड, मतलब 125 सेक्शन नहीं लगेगा, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा. It is to be noted that the subsection 4 and subsection 5 are only applicable when the marriage is subsisting, that is there is no divorce. In Malti Sahu versus Vagyor Sahu 1991 1 crime 677 page number 679 Orissa case, the court opined that the provision of section 125 subsection 4 is an exception to the general rule embodied in subsection 1. तो naturally आप लोग देखेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट इसमें बताया था आपको कि जो रिस्पोंडेंट क्या करता है ये टाइम पे, ये शो करने की कोशिश करता है. मतलब हमने 4 प्रूव देखे थे कि उनका मैरिज इनवैलिड है, बाद में सेकंड प्रूव करने वाला था कि उसके पास सफिशिएंट मींस नहीं है पैसे देने के लिए. थर्ड, दैट वाइफ और दैट क्लेमेंट इज एबल टू मेंटेन हरसेल्फ. ये सब चीज वो प्रूव कर सकता है, बराबर है ना, ये सब प्रूव करता है. उसमें और एक चीज प्रूव करने की कोशिश की जाती है, एडल्ट्री है, सफिशिएंट रीजन नहीं है, ये सेपरेट लिविंग, ये भी प्रूव करने की कोशिश की जाएगी. ओके, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग इट? ओके, नाउ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 subsection 5. On proof that any wife is in whose favor an order has been made under this section is living in adultery, or that without sufficient reason she refuses to live with her husband, or that they are living separately by consent, the magistrate shall cancel the order. Now see, magistrate ने section 125 के हिसाब से 1 के हिसाब से ऑर्डर कर दिया, और ऑर्डर करने के बाद में अगर हस्बैंड ने प्रूफ कोर्ट को ये किया दे दिया कि वो वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री और शी हैज नॉट सफिशिएंट रीजन टू लिव सेपरेटली, और म्यूचुअल कंसेंट, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से अलग अलग रहे, ये अगर प्रूफ दे देता है एंड मैजिस्ट्रेट उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है, इन दैट केस मैजिस्ट्रेट कैन कैंसल द ऑर्डर. दैट इज सबसेक्शन 5. ओके, we'll go to the next part, that is provision of section 126 subsection 1. ये सब प्रोसीजर की बात करते हैं, ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं. Proceedings under section 125 may be taken against any person in any district where he is or where he is, मतलब वो किधर है,
वो किधर रहता है, जिसको मतलब डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट कहा रहता है. सेकेंडली, नाउ सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए इज फॉर वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट. बी और सी की बात जो कर रहे हैं वो सिर्फ वाइफ के लिए. ए की बात जो हम लोग कर रहे हैं, वेयर ही इज फॉर वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. ये लोग अगर क्लेमेंट है तो. और बी और सी की बात सिर्फ वाइफ के लिए. तो व्हाट इज बी? वेयर ही और हिज वाइफ रिसाइड्स, मतलब वो किधर रहता है या उसकी वाइफ किधर रहती है उसके ऊपर. एंड वेयर ही लास्ट रिसाइडेड विथ हिज वाइफ और एज द केस में बी विद द मदर ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड. इसके साथ में, और यहाँ रहने का मतलब ये नहीं कि फ्लाई बाय, मतलब एक कहाँ घूमने गए थे 2 दिन रह गए आ गए, ऐसा नहीं. कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए रहने चाहिए, ऐसा उसका एक्सपेक्टेशन है सी का भी. ओके. इन पैरेलल वर्सेस सियावाली 1997 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2652 पेज नंबर 2654 Allahabad case, the court held that a petition under section 125 CRPC can be filed at the place where the wife is living at the moment. मतलब उसको पॉसिबिलिटी है, मतलब उसको ऑथोरिटी दी है एट द मोमेंट. इट इज नॉट नेसेसरी दैट हर लिविंग एट द प्लेस शुड बी परमानेंट. इसका मतलब समझो हस्बैंड के घर से निकल गई और अपने भाई के पास रहने गई, बराबर है. अभी फिलहाल तो मोमेंटली वो कहाँ रह रही है, भाई के पास. तो इन दैट केस शी कैन फाइल दैट पर्टिकुलर मेंटेनेंस सूट इन मेंटेनेंस केस इन द वेयर शी इज रिसाइडिंग मोमेंटली दैट पर्टिकुलर. ओके. सो इट इज सेक्शन, इसमें बी प्रोविजन यूज किया गया है. इन विजय कुमार प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2004 5 CC 196 केस, द कोर्ट हेल्ड दैट एन एप्लीकेशन बाय फादर और मदर क्लेमिंग द मेंटेनेंस हैज टू बी फाइल्ड वेयर द पर्सन फ्रॉम whom मेंटेनेंस इज क्लेम लाइव्स. मैंने क्लियर किया पहले ही, ये पहले ए किसके लिए है, तीनों के लिए ये भी है, वाइफ के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए, पेरेंट्स के लिए. उनको वहीं उनको पिटिशन डालना है कि जहां वो जो रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट रहता है. और बी और सी प्रोविजन सिर्फ वाइफ के लिए है. ओके. नाउ कम टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 126 सबसेक्शन 2. All evidences to such proceedings shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or when his personal attendance is dispensed with in the presence of his pleader, and shall be recorded in the manner prescribed for summons case. Now now this is very important कि जो कोई इसके एविडेंसेस लेने ये केस में, वो जो पर्सन के अगेंस्ट ये जो केस चल रहा है या रिस्पोंडेंट प्रेजेंट है उसके प्रेजेंस में होने चाहिए, या अगर कोर्ट ने उसको डिस्पेंस ऑफ किया कि आप नहीं आएंगे तो भी चलेगा, आपका वकील आएगा, दैट इज एक्सेप्टेबल. इन दैट केस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लीडर, इनके एब्सेंस में ये नहीं हो सकता है. एंड शैल बी रिकॉर्डेड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब फॉर द समन्स केस. समन्स केस में जिस तरह रिकॉर्डिंग होती है केस की, उस तरह इसकी होगी. इसका प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऊपर वाला पार्ट अगर हम लोग देखेंगे, अगर कोर्ट ने उसको डिस्पेंस ऑफ कर दिया है, वो प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं रहता, कभी कभी उसके वकील प्रेजेंट नहीं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, provided that if the magistrate is satisfied that the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is willfully awarding services. That is very important. willfully, इसके लिए वो मतलब जो मैजिस्ट्रेट है उसको पहले कंफर्म करना पड़ता है, उसको सेटिस्फाई करने का पड़ता है खुद को. he is willfully that particular respondent is willfully awarding the service or willfully neglecting to attend the court. The magistrate may proceed to hear and determine the case ex parte, and any other order so made may be set aside for good cause shown on the application made within the 3 months from the date therefore subject to such terms, including terms as to payment of costs to the opposite party as the magistrate may think just and proper. Now इसके important ये प्रोविजन में क्लियर उन्होंने मेंशन किया है कि अगर एक्स पार्टी अगर जो है रिस्पोंडेंट है, अगर विलफुली अगर सर्विस अवार्ड कर रहा है या विलफुली कोर्ट में अटेंड होने को निगलेक्ट कर रहा है, इन दैट केस प्रोसीड मैजिस्ट्रेट में प्रोसीड एक्स पार्टी मेंटेनेंस ऑर्डर में निकाल सकता है. लेकिन इसके लिए उन्होंने एक और आगे बताया है कि अगर वो जिसके खिलाफ ये एक्स पार्टी ऑर्डर निकला वो 3 महीने के अंदर
अगर कुछ प्रॉपर रीजन से वो अगर उसको प्रॉपर रीजन बता देता है, हो सकता है वो आदमी बता देगा कि वो दिखा देगा कि मैं 6 महीने ये पर्टिकुलर 3 महीने ये जब ये केस का पीरियड था तब मैं आउट ऑफ स्टेशन था, ये जुरिडिक्शन में नहीं था। हो सकता है वो प्रूफ भी दे दे कि वो जिस कंपनी में या जो प्रोजेक्ट पे काम करता उस प्रोजेक्ट पे वहां 3 महीने प्रेजेंट था, उसको उधर जरूरत थी। इन दैट केस मतलब प्रॉपर अगर रीजन होगा और वो जस्ट सेटिस्फाई मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाई हो जाता है, इन दैट केस ये ऑर्डर को बाद में स्टे कैंसिल किया जा सकता है और बाद में आगे प्रोसीडिंग्स वापस चलते हैं, इंक्लूडिंग टर्म्स एज टू पेमेंट कॉस्ट ऑपोजिट पार्टी। और इसके लिए इसे केस लॉ देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। केस लॉ है इन बालन नायर वर्सेस भवानी अम्मा 1987 criminal law journal 319 Kerala FB case, the court held that blind insistence of presence of opposite party when evidence is taken is susceptible of vast abuses because that would place in within the power of the opposite party to see that proceedings are indefinitely postponed. It is to award this magistrate is empowered to proceed ex parte. मतलब बहुत बार ऐसे दिया गया है, जो ऊपर वाला पार्ट जो हमने पढ़ा कि उसको डिस्पेंस ऑफ कर दिया है, उसका प्लीडर प्रेजेंट रह सकता है, लेकिन प्लीडर बोल सकता है कि अभी मैं ये इधर नहीं हूं, मैं दूसरे कोर्ट में हूं, ये सब बता के उसमें बहुत बार आगे वाली डेट लेते जाते हैं। तो ये ऐसा ना हो, इसीलिए ये पर्टिकुलर प्रोविजन दी गई है। नाउ विल कम टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126 सबसेक्शन 3। The court in dealing with the application under section 125 shall have power to make such order as to cost as may be just। मतलब ये इसका जो प्रोसीडिंग्स हुआ उसका कॉस्टिंग का भी पेमेंट का ऑर्डर भी रिस्पोंडेंट के खिलाफ निकल सकता है। प्रोविजन सबसेक्शन 127 सबसेक्शन 1 रीड्स लाइक दिस। On proof of change in the circumstances of any person receiving under section 125 a monthly allowance for the maintenance of interim maintenance, or ordered under the same section to pay a monthly allowance for the maintenance or interim maintenance to his wife, child, father or mother, as the case may be, the magistrate may make such alteration as he thinks fit in the allowance for the maintenance of the interim maintenance as the case may be. Now, if we study that section 127 of the code provides for that upon proof of any change in the circumstances. Now, we are going to study what it means by the phrase the proof of any change in the circumstances of any person receiving or paying a monthly allowance, as the case may be. The magistrate may make an alteration in the allowance as he may deem fit. Similarly, if it appears to the magistrate that the consequences of any decision of a civil court, the maintenance order should be varied or cancelled. हमने पहले ही देखा है कि जैसे ये यहाँ अगर 125 सेक्शन 125 के ऊपर अगर क्रिमिनल कोर्ट में केस चालू है, उसी वक्त सिविल कोर्ट में हिंदू लॉ के हिसाब से या दूसरे किसी लॉ के हिसाब से केस चालू होगा, तो सिविल केस है। तो सिविल केस में जो फाइनल डिसीजन आएगा वो हिसाब से क्रिमिनल कोर्ट मतलब ये 125 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर मॉडिफाई करना पड़ता है। Similarly, when any order is made in favor of a divorced woman, the magistrate must, if he is satisfied that the woman has remarried after the date of the order, cancel such order as from the date of the remarriage. Proof of change must be given to the court. Now, this is very important. Whenever any party want to alter that particular order given under section 125 subsection 1, then he has to submit proof to the court, and the magistrate should satisfy himself that these particular proofs are sufficient to mean that there is a change of circumstances. Now, what is the change of circumstances? The possibilities that wife becomes earning member, wife remarrying, change of guardianship of child, पहले wife के पास था, बाद में husband के पास गया, child becoming major, or death of a child. In all these cases, the change in the can be considered the change in the circumstances, and we have to get a altered order. Subsection 2, where it appears to the magistrate that in consequence of any decision of a competent civil court, any order made under section 125 should be cancelled or varied, he shall cancel the order, or as the case may be, vary the same accordingly. Now, it is well settled principle that a judgment of the civil court prevails over the judgment of the criminal courts. The criminal court has to adjust the maintenance order by considering the order of the civil court. In some cases, the criminal court has to cancel the order. Now, we are going to study some case laws in this case. First,
is Bhagwan Dutt versus Kamala Devi, AR 1975, SC 83 case. The court observed that the phrase "the change in circumstances" refers to a change in the pecuniary, यानी money के term में बात करें, pecuniary or other circumstances of the party paying or receiving allowance, which would justify an increase or a decrease of the amount of the monthly payment originally fixed. मतलब अगर पार्टी के रिसीविंग करने वाला आदमी या पेइंग करे, दोनों के पिक्यूनरी कंडीशन में अगर चेंज हो गया तो ऑर्डर को मॉडिफाई किया जाता है प्रूफ के बाद में. इन राजकुमार वर्सेस शांताबाई 2002 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2894 case, the Rajasthan High Court observed that Section 127 subsection 1 of CRPC provides a proof of change in the circumstances if of any person receiving under Section 125 a monthly allowance or order under the same section to pay a monthly allowance to his wife, child, father or mother, as the case may be. The magistrate may make such alteration in the allowance as he thinks fit. It is a discretionary power of the magistrate. In Rukmini 1891 AWN 32 case, court observed that the expression change in the circumstances is section 127 does not refer to temporary or accidental. थोड़ा मतलब अभी समझो एज्यूम करो कि हस्बैंड एक कुछ मेंटेनेंस दे रहा है, उसको एक लॉटरी का टिकट लग गया, थोड़ा टेम्पररी चेंज है, उसका कंटिन्यूअस चेंज नहीं हो, that cannot be considered. Okay, such as the person's but a change in all the circumstances connected with the condition of the person concerned should be taken into account. The expression ordinarily implies a change in the material circumstances of the person, his property or otherwise, as increase or decrease in liabilities and so on. In PK Panda versus Aman Kumari Panda 1996 Criminal Law Journal 553 Orissa case, the court held that the rise in cost of living amounts to change in the circumstances entitling to the wife to claim enhanced maintenance. जब ये मेंटेनेंस पास हो गया था तभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लिविंग कॉस्ट कुछ अलग थी. थोड़े दिन के बाद में समझो लिविंग कॉस्ट बढ़ गई या कम होगी, बढ़ गई, जनरली बढ़ती है. ओके, इन दैट केस शी हैज राइट टू आस्क फॉर अल्टरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेंटेनेंस अमाउंट. In T. Kausalya versus T. Narayan Reddy 1998 Criminal Law Journal 1795 AP case, the husband whose income diminished or on retirement was directed to pay maintenance allowance at a reduced rate. Now this is very important. अभी ये चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हो गया. जब भी जो मेंटेनेंस का ऑर्डर निकला तभी हस्बैंड जॉब में था और इसके बाद में वो रिटायर्ड होने के बाद में उसका इनकम कम हो गया, तो नेचुरली ये मेंटेनेंस ऑर्डर को मॉडिफाई किया गया, कोर्ट ने मॉडिफाई किया. In Bhagwat Singh versus Sujit Kumar 1981 Criminal Law Journal 151 Punjab and Haryana DB case, the court held that the civil court's decision relates specifically on point of maintenance. The magistrate will be able to cancel or vary the earlier order under section 125 accordingly. ये सबसेक्शन जो इसका सबसेक्शन 2 था उसके हिसाब से जर्नल है, जजमेंट है, आप लोग समझेंगे कि अगर सिविल कोड का कोई जजमेंट आता है तो वो हिसाब से क्रिमिनल कोड का जजमेंट सेक्शन 125 का मॉडिफाई हो जाएगा और अल्टर हो जाएगा. Now we'll come to provisions of section 127 subsection 3. Where any order has been made under section 125 in favor of the woman who has been divorced by or has obtained divorce from her husband, the magistrate shall, if he is satisfied that. तो ये हम लोग अगर ऊपर का ही प्रोविजन देखेंगे तो उसमें क्लियर मेंशन किया है, this is only applicable to woman who has been divorced or obtained divorce. मतलब हस्बैंड ने डिवोर्स दिया, उसने ऑब्टेन किया. The woman has after the date of such divorce remarried, cancel such order as from the date of her remarriage. जिस दिन उसका रीमैरिज होता है उस दिन के बाद में उसको हस्बैंड को कुछ देने की जरूरत है, उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है. The woman has been divorced by her husband and that she has received whether before or after the date of the said order the whole of the sum which under any customary or personal law applicable to the parties was payable on such divorce, cancel such order. Now clause 1, in the case where such sum was paid before such order from the date on which such order was made, in any other case from the date of expiry of the period, if any of which is maintenance has been actually paid by the husband to the woman. अभी क्या होता है कि डाइवोर्स के टाइम पे सिविल कोर्ट एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देने को, पूरा का पूरा अमाउंट देने को एक साथ देने के लिए बोलता है. तो इन दैट केस ये जो पहले जब ये क्रिमिनल 125 के आधार के ऊपर अगर वो हस्बैंड ने
या सन ने पेरेंट को, बच्चों पेरेंट्स ने बच्चों को अगर देना है, तो सिविल कोर्ट ने अगर जजमेंट दिया तो वो हिसाब से जो पहले पेमेंट किया उसको भी कंसिडर किया जाएगा और उतना डिडक्ट करके ही अमाउंट उसको दिया जाएगा. द वुमन हैज ऑब्टेन्ड अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड and that she had voluntarily surrendered her rights to the maintenance as interim maintenance, as the case may be. After her divorce, cancel the order from the date of thereof. अभी जैसे ऐसे भी हो सकता है कि डाइवोर्स हो गया और उस वक्त डाइवोर्स होते समय उस वाइफ ने अपने सब वॉलंटरी राइट है सरेंडर कर दिया, मेंटेनेंस मिलने के या इंटरनेट मेंटेनेंस मिलने के राइट्स अब सरेंडर कर दिए. इन दैट केस द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेंटेनेंस कैन बी कैंसिल. सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इतना पार्ट. Now, provision of section 127 subsection 4. At the time of making any decree for the recovery of any maintenance or dowry by any person to whom a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance or any of them has been ordered to be paid under section 125, the civil court shall take into account the sum which has been paid to or recovered by such person as a monthly allowance for the maintenance and interim maintenance on or any of them, as the case may be, in pursuance of that said order. Now, this is very important. This is not direction to the criminal court. It is direction to the civil court. इसमें क्लियर बताया गया है कि जब ही सिविल कोर्ट ये डिसीजन ले रहा है, सिविल कोर्ट जब अपना डिसीजन दे रहा है तो उसको वो कंसिडर करना चाहिए कि सेक्शन 125(1) के हिसाब से हस्बैंड ने वाइफ को या बच्चों ने पेरेंट्स को या पेरेंट्स ने बच्चों को जिसका मेंटेनेंस को देना है वो कितना दिया है अब तक. पर्टिकुलरली डाइवोर्स केस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डाइवोर्स के बारे में ही जा रहे हैं. वाइफ की ही बात होगी, पेरेंट्स की बात तो यहाँ आएगी नहीं बच्चों की. तो आप लोग देखेंगे यहाँ कि अब तक कितना दिया है वो सब डिडक्ट करके ही सिविल कोर्ट अपना जजमेंट. दिस सो वी कैन से दैट सबसेक्शन 4 इज अ गाइडलाइन फॉर सिविल कोर्ट एंड नॉट फॉर क्रिमिनल कोर्ट. एंड लास्ट प्रोविजन फॉर सेक्शन 128. आई मीन 128 का जो प्रोविजन है उसका जो है आइडिया है कि इसका इन्फोर्समेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर का इन्फोर्समेंट कैसे करते हैं. अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स एज द केस मे बी shall be given without payment to the person in whose favor it is made or to his guardian, if any, or to the person to whom the allowance for the maintenance or the allowance for the interim maintenance and expense of the proceeding as the case may be is to be paid. मतलब जिसके फेवर में अगर ऑर्डर निकला है उसको देंगे, या अगर माइनर है तो नेचुरली उसको गार्डियन को देना पड़ेगा. And such order may be enforced by the magistrate in any place where the person against whom it is made may be on such magistrate being satisfied as to the identity of that parties. मतलब वो आइडेंटिटी का पार्टीज का आइडेंटिटी मैजिस्ट्रेट प्रूव करेगा और बाद में उनको वो दे देगा. And being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the allowance or as the case may be expenses due. ये सब non-payment of allowance ये जो है हमने सेक्शन 125 में ही किए हैं. उसमें देखा अगर अलाउंस नहीं देता है मंथली के मंथली तो बाद में 1 साल के अंदर क्लेमेंट है एप्लीकेशन कर सकता है और उसके लिए उसको हर 1 महीने के डिफॉल्ट के लिए 1 महीने की सजा हो सकती है, इम्प्रिजन की सजा हो सकती है. ओके, दैट कंप्लीट्स द टॉपिक. Don't forget to subscribe to our channel for more videos and press the bell icon to receive updates.